Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 7 exercise class, and today I am here to give you the work of the human transport system. Inshallah, all the work will be given you today. First of all, you have to write these abbreviations: WBC, RBC, HBDNA, RNA, white blood cells, red blood cells, hemoglobin, deoxyribonucleic acid, and ribonucleic acid, RIBONUCLEIC, ribonucleic acid. Further, you have to do short question answers. There are 5 short question answers. What is the main job of human circulatory system? The main job of circulatory system is to transport or carry substances around the body. Question number 2 is, what are the materials carried by the blood? Answer is, the materials carried by the blood include dissolved food, water, oxygen, carbon dioxide, urea, and hormones. Then here comes question number 3. Why does lack of iron in the diet sometimes lead to anemia? If the diet lacks iron, the body may not be able to make enough hemoglobin, and so the blood will not be able to carry sufficient oxygen and the person will lack energy. Question number 3, I think मैंने miss कर दिया. Question number 3. What does hemoglobin do in the body? Hemoglobin is a protein combined with iron which enables red blood cells to carry oxygen. Here comes question 5. What work does a valve in the heart or vein do? What is faulty heart valve and how can it be replaced? Answer is, a valve in the heart or vein stops the blood from flowing backwards. If the valve of the heart do not shut properly, the heart cannot work efficiently. Sometimes a faulty heart valve is replaced with an artificial valve. Then here comes long question answers, and the first question is, what are the 4 main parts of the blood? Describe what each of them does. Answer: for main parts of blood include red blood cells, RBCs, white blood cells, WBCs, plasma and platelets. Red blood cells, their main function is to carry oxygen. White blood cells, they produce antibodies to fight germs. These antibodies kill germs and change the produced poisons into harmless substances. Plasma, RBCs and WBCs are suspended in a liquid called plasma. It also contains glucose, vitamins, amino acids, and mineral salts, along with waste products like carbon dioxide, urea, as well as hormones. It also contains the blood proteins fibrinogen, which helps blood to clot. Then here comes platelets. These small cell fragments help to seal wounds by clotting the blood. Question number 2 है, describe the route of blood leaving the lungs to get back to lungs. Answer is, oxygenated blood leaving the lungs passes through the left atrium of the heart, from where it is pumped to the left ventricle, which pumps it into the main artery, the aorta. The drop of blood eventually reaches the capillaries, which carry the blood into tissues. As the blood leaves the tissues, the capillaries join up to form veins. Veins carry the blood back to the right atrium of the heart.
an artery called pulmonary artery then pumps the deoxygenated blood back to the lungs. और इसके साथ आपको डायग्राम नंबर जो पेज नंबर 21 पे दी गई है वो आपको ड्रॉ करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस डायग्राम फ्रॉम पेज नंबर 21, देखिए पेज नंबर 21 पे है ये डायग्राम। आपको लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपने ये ड्रॉ करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस, हाउ डू वेन्स डिफर फ्रॉम आर्टरीज एंड कैपिलरीज एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये पूरा टेबल आप लोगों को बनाना है। ये आई थिंक अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, इसमें राइटिंग का कोई जो है प्रॉब्लम हो, तो ये आपको पूरा टेबल आपको पेज नंबर 23 पे मिल जाएगा और वहीं पे इसकी डायग्राम मौजूद है। पेज नंबर 23 मैंने मेंशन किया हुआ है और वहीं पे ये जो डायग्राम है ये भी आपको इसके साथ ड्रॉ करनी है। ये रहा पूरा टेबल मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, और ये डायग्राम है जो आप लोगों को ड्रॉ करनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, थ्रू अ डायग्राम शो द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। और ये डायग्राम आपको मिलेगा फ्रॉम पेज नंबर 20। दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये डायग्राम है जो आप लोगों को ड्रॉ करना है कंप्लीट लेबलिंग के साथ। इसके बाद है ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड अ डायग्राम वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 19 पे, दिस वन। ये आपको कंप्लीट ड्रॉ करना है और इसकी प्रॉपर लेबलिंग करनी है। इसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अ हार्ट ट्रांसप्लांट इज अ लाइफ सेवर फॉर समवन विद हार्ट फेलियर। Number 2, the average human being has about 5 liters of blood. Number 3, all arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Number 4, varicose veins are veins that have swollen because the valves in the legs do not work properly. Number 5, pacemaker is a small device to help control heartbeat if natural pacemaker is faulty. Number 6, the level of glucose in the blood is controlled by a hormone called insulin. Now here comes MCQs. ये भी हमारे पास 6 MCQs हैं, 6 MCQs हैं। Which cell of body do not have a nucleus? Answer is red blood cells. What substance do blood capillaries take to the cells of body? Oxygen and dissolved food इसका आंसर है। The space inside a long bone contain marrow. Number 4, how many blood vessels carry blood away from the heart? Answer is 2. Which side of the heart carries oxygenated blood? Answer is the left. The average pulse rate per minute for an adult at rest is 70. इसके बाद ये ग्लॉसरी है। आर्टरी, एट्रियम, एट्रियम प्लूरल जिसका एट्रिया होता है। इसके बाद है हमारा बोन मैरो, दैन कैपिलरीज, हीमोग्लोबिन, वेन एंड वेंट्रिकल। ये आपका कंप्लीट वर्क है फ्रॉम A to Z, आपका कंप्लीट चैप्टर है और कोशिश कीजिएगा कि ये आप मंडे या ट्यूसडे तक इसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हमने किया है उसका वर्क आप इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उसका वर्क जो है वो हर वीडियो के साथ दूँ ताकि आपके लिए बर्डन ना हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।